He was engaged by which contractor? He was engaged directly by the department By only, the my lords. department, But where are the terms and conditions of the engagement? Direct से नहीं होगा, डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट जवाब दीजिए। शुक्ला जी आगे आ जाइए। कहाँ है इनका एंगेजमेंट? आपने ऐसे ही अपने पास से रख लिया कि कोई आदेश जारी किया था? नहीं, आदेश जारी नहीं किए थे सर। क्यों नहीं किया था आपने आदेश? इसके लिए तो आपकी इंक्वायरी करानी पड़ेगी। किस प्रावधान के अंतर्गत इनकी नियुक्ति हुई है ये बताइए। अंदाज से मत बताइए, मुझे डॉक्यूमेंट बताइए। पहले बताइए पालक शिक्षक संघ का गठन कैसे होता है? हवा में आप मेरे को नहीं चला पाएंगे। आपका क्या रोल है उसमें पालक शिक्षक संघ में, या आपके प्रिंसिपल की क्या भूमिका है? कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर सचिव जारी करता है कि कोई और जारी करता है? हम आपका रिकॉर्ड कर लेते हैं, कल को कहीं ऐसा ना हो कि हमें आपकी लोकायुक्त जांच के लिए ऑर्डर करना पड़े। तो मालूम पड़ा आपको कि ये फर्जी अपॉइंटमेंट हुए थे? आपने जो बताया वो मैंने लिख दिया। मैंने कोई एक भी शब्द इधर उधर लिखा हो तो बता दीजिएगा। अब उसका जो निष्कर्ष है वो तो निकालने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। वो चीज आपके हाथ में थोड़ी ना दे सकता हूँ मैं, ना आपको दे सकता हूँ, ना सरकारी वकील साहब को दे सकता हूँ। पिछली बार मैंने पर्सनल अपीयरेंस के लिए कॉल किया as था। per the last order sheet dated 25th October, the assistant commissioner is also present, my lords. हाँ, कहाँ बुलाइए? जी। हाँ। I may just what has happened in this case, my lords? Initially, a return was filed, which was not very appropriate, and that is why, my lords, an affidavit was filed of the assistant commissioner. कब? Now, my lords, on that affidavit was filed on 18th of October. Now, that affidavit also, as per the order sheet of 25th October, my lords, if I may read that, my lords, 25th October. Order sheet. जी. Though respondent Shri Santosh Shukla, son of this presently working as Assistant Commissioner Tribal Affair Department District Dindori, has filed his affidavit, but there is no explanation that why minimum wages have not been paid to the petitioner. Affidavit is silent on this aspect. It is also silent under what provision of law minimum wages can be denied to the petitioner. Let this be personally present before this court on the next date of hearing to answer the queries of this court. My lords, may I just point out two aspects of the matter, my lords? What has happened in this case, my lords? The petitioner, in fact, he has also pleaded that he was appointed. So he was not exactly appointed in this department, my lords. There's one circular we have filed along with the affidavit of the deponent only, my lords. That there's a circular of the Department of Finance which says that for a short duration of time, if we are engaging someone as a casual labor only, my lords, I'll point out that affidavit is there, the document is there on record. So the minimum wages has been fixed at 5,000 rupees. My lords, wo inhi ke affidavit mein, my lords. Perhaps I'm tender apologies. On the last date of hearing, the panel counsel must not have been able to apprise of this aspect to the honorable court. That is there, my lords, at annexure D6, my lords. D6, page number 14 of the affidavit of Mr. Santosh Shukla only. जी, उसकी टाइप कॉपी भी लगाई हुई है सर हमने, वो दैट वाज नॉट अ वेरी लेजिबल कॉपी. सो द टाइप कॉपी में रीड दैट माय लॉर्ड्स. विषय स्कूल में कार्यरत अंशकालीन लिपिक, अंशकालीन भृत्य एवं अंशकालीन सफाई कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि. संदर्भ वित्त विभाग के ये ग्राफ क्रमांक विस्तृत. राज्य शासन की विभिन्न गतिविधियों योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मैदानी कार्यालयों द्वारा अल्प अवधि के. पहले तो ये बताइएगा, इनका अपॉइंटमेंट अंशकालीन है? मैं वही बता रहा हूँ सर. अब इनके केस में क्या हुआ सर, हमने इंक्वायरी रिपोर्ट भी लगाई है. He was never appointed in this department, my lord. इसके जो experience appointed in the department. जी. He was engaged by which contractor? He was engaged directly by the department by only, the department, but where are the terms and conditions of the engagement which shows that his engagement was part time? My lords, in fact, if I may just से नहीं होगा, डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट जवाब दीजिए. Where is the order of engagement showing his engagement as a part-time engagement? Show me that order. My lords. बताइए, आइए. जी, शुक्ला जी आगे आ जाइए. सर, कहाँ है इनका एंगेजमेंट? आपने ऐसे ही अपने पास से रख लिया कि कोई आदेश जारी किया था? नहीं, आदेश जारी नहीं किए थे सर. क्यों नहीं किया था आपने आदेश? इसके लिए तो आपकी इंक्वायरी करानी पड़ेगी. सर, जो आरंभ संवितरण अधिकारी स्कूल के बीओ प्रिंसिपल रहते हैं, हमें नहीं मालूम किस प्रावधान के अंतर्गत इनकी नियुक्ति हुई है ये बताइए. पालक शिक्षक समिति होती है सर स्कूल में. वो आपस में वही एक बैठक करते हैं और अपने स्थानीय आदमी से. क्या प्रावधान है पालक शिक्षक समिति द्वारा नियुक्ति दिए जाने का? उसका सर ये प्रावधान है कि एक ऐसे बिना आवेदन किए जिससे नियुक्ति के लिए कभी ये मतलब वो नहीं कह रहे कि हमारी नियुक्ति. अंदाज से मत बताइए, मुझे डॉक्यूमेंट बताइए. पहले बताइए पालक शिक्षक संघ का गठन कैसे होता है और उस गठन में जो है उस संस्था के क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, वो बताइए पहले. कहाँ है वो दस्तावेज? हवा में आप मेरे को नहीं चला पाएंगे. कहाँ है वो पालक शिक्षक? आई विल रिकॉर्ड एवरीथिंग and you produce on record how parent teacher association is formed
and what are their rights and liabilities to appoint a person. And they can appoint anybody or everybody without issuing appointment order. And the principal and the assistant commissioner has no role in the appointment. आपका क्या रोल है उसमें पालक शिक्षक संघ में, या आपके प्रिंसिपल की क्या भूमिका है? वो सचिव के रूप में रहता है जो रहता है ना, सर। तो कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर सचिव जारी करता है कि कोई और जारी करता है? सर उसमें केवल ऐसे मौखिक कहा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर। हम आपका रिकॉर्ड कर लेते हैं, कल को कहीं ऐसा ना हो कि हमें आपकी लोकायुक्त जांच के लिए ऑर्डर करना पड़े। देखिएगा श्री शुक्ला, एक सेकंड पहले अभी रिकॉर्ड कर लीजिए, दस्तावेज लेकर आइएगा सारी बातें। रुक जाइए, वेट करिए। श्री शुक्ला, संतोष शुक्ला, असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट, डिंडोरी, प्रेजेंट इन पर्सन along with Shri Rohit Jain, learned government advocate, placing reliance on Finance Department circular issued by Mantralaya Vallabh Bhavan Bhopal, bearing number F.8-3/2015/Niyam/4, dated 27 March 2015. It is submitted that for a part-time employee, remuneration was fixed at ₹5,000 with effect from May 2015. Next para. Shri Shukla submits that appointment of the petitioner was on a part-time basis and that was made by the Parent Teacher Association of which school? स्कूल का नाम बताइए। बीओ कार्यालय से विकास खंड शिक्षा अधिकारी। पेरेंट टीचर एसोसिएशन विकास खंड अधिकारी में भी होता है। बाय द बीईओ, पेरेंट टीचर एसोसिएशन अटैच्ड टू द बीईओ, दैट इज ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिंडोरी, फुल स्टॉप, समनापुर डिंडोरी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा, असिस्टेंट कमिश्नर इज डायरेक्टेड टू ब्रिंग ऑन, एंड इट इज ऑल्सो सबमिटेड दैट such appointments are made on oral instructions of the parent teacher association. No written order is issued in favor of the person so appointed. Full stop. Shri Shukla is directed to bring on record copy of the procedure which is to be followed for constitution of a parent teacher association. Full stop. Next paragraph. He will also bring on record that a parent teacher association is associated with the block education officer and not with a particular school, because his submission is that the parent teacher association was attached to the BEO. Full stop. Next, since Shri Shukla admits that principal of the school is the secretary of the parent teacher association, he will bring on record the rights, duties and liabilities of the secretary of the parent teacher association, so also other post bearers. Full stop. He will bring on record copy of the provisions contained in formulation of parent teacher association that they can appoint somebody on oral instructions without issuing any order in writing, and a person who is so appointed on oral instructions is liable to be paid salary as a part-time employee. कहाँ से देते हैं सैलरी ये? सर इसमें क्लियर किया हुआ है सर, ये जो विकास खंड शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी समनापुर, from is entitled to draw his salary from the office of block education officer. Sir, under fully voucher contingent bill. Under fully voucher contingent bill, ये एक इंक्वायरी हमने करी थी। Under fully voucher contingent bill. Full stop. Let these documents be filed on record within 3 days, along with affidavit of Shri Shukla. List this case on 6 November, top of the list. सर एक बस निवेदन करना है, एक बस इनके एफिडेविट में पेज नंबर 8 एक बार में एफिडेविट का। इसमें क्या हुआ था सर, इनने जो एनेक्सियस P1 के जो बताए हैं, जिसमें बोल रहे हैं कि हम इतने साल से काम कर रहे थे डेटा एंट्री ऑपरेटर। पेज 8 सर, ये प्रतिवेदन है सर, एक आपका एफिडेविट के साथ ना? एफिडेविट के साथ सर। हाँ देखें जरा इसमें सब कुछ क्लियर किया है सर कि कैसे पिटिशनर ने इन कल्यूजन विद द अथॉरिटीज
कौन सी अथॉरिटीज? सर ये इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट की, और ये सर पढ़िए, अभी क्या लिखा है, पढ़िए। सब मैं पढ़ देता हूँ सर। श्री राजकुमार नंदा पिता दिस ग्राम वे पोस्ट समनापुर, जिला डिंडोरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर में याचिका क्रमांक 461923 प्रस्तुत माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 15/9/23 के जवाब दावा प्रस्तुत किए जाने के परिप्रेक्ष्य में जांच समिति के द्वारा समस्त विभागीय नियमों को संकलित कर पुष्टि एवं स्पष्टता के लिए नियमानुसार बिंदु में जानकारी इस प्रकार है। श्री राजकुमार नंदा पिता श्री देवचरण नंदा ग्राम समनापुर के दिनांक 8/7/10 में नियुक्ति से संबंधित प्राचार्य शासकीय मझगवा के कार्यालयीन अभिलेखों का दिनांक 8/7/10 से आज दिनांक तक सूक्ष्म परीक्षण किया गया, जिसमें वर्ष 2010 से 18 तक के नियुक्ति आदेश नहीं पाया गया। तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री हरि सिंह परते के द्वारा कंप्यूटर कार्य हेतु मजदूरी पारिश्रमिक दर पर रखा गया था। श्री नंदा का अनुभव प्रमाण पर तत्कालीन विकासखंड अधिकारी शिक्षा अधिकारी श्री हरि सिंह परते के द्वारा ही जारी किया गया था। कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग डिंडोरी के आदेश क्रमांक दिनांक 9/10/18 द्वारा श्री राजकुमार नंदा आत्मज दिस को शासन द्वारा स्वीकृत सहायक ग्रेड 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर एवं शाला प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के आधार पर शासकीय हाई स्कूल मझगवा विकासखंड समनापुर जिला डिंडोरी में कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर कार्य करने की अनुमति दी गई थी तथा कार्य मूल्यांकन के आधार पर बिना पूर्व सूचना के कार्य से पृथक किया जा सकेगा। तदनुसार कार्यादेश जारी किया गया था। कार्य करने की अनुमति दी गई थी। प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझगवा के शासन के शाला प्रबंधन समिति के प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, जिसमें श्री नंदा की नियुक्ति के संबंध प्रस्ताव में पारित नहीं किया गया आपके था और ना ही शुक्ला जी क्या बोल रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है, तो जांच रिपोर्ट को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। लिखिएगा एट दिस नेक्स्ट नहीं एट सर, दिस ये पॉइंट ऑफ नीचे टाइम। लिखा ना सर उसमें। श्री, अरे रुकिए, तो आपके शुक्ला जी तो सामने खड़े हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। यू कैन नॉट टेक अ हाँ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं, मैं स्टैंड। वो तो ले ही नहीं रहा हूँ सर। कमिट्स दैट इनकी ब्लॉक जांच ऑलरेडी हुई थी सर, वही बोल रहा हूँ। एजुकेशन ऑफिसर डेवलपमेंट ब्लॉक समनापुर submitted his inquiry report vide annexure D2 dated 11/10/2023 in which it is mentioned that no appointment order was issued, जी though he was appointed by one Shri Hare Singh Parte, the then development block education officer, on daily rate wages or daily rater on collector wages, full stop. This is contrary to the stand taken by Shri Shukla in front of this court along with Shri Jain that he was appointed by the Parent Teacher Association and there is no need for issuance of any order by the Parent Teacher Association, full stop. It is also contrary to the fact that the inquiry report is also contrary to the statement made by Shri Shukla that he was a part-time employee and therefore in terms of finance department circular, his wages were drawn at rupees 5,000 per month, full stop. In fact, this inquiry report appears to be a sham document. On the one hand, it says that he was appointed, petitioner was appointed on collector rates, and on the other, and no appointment order was found on the record. And on the other hand, it is submitted by Shri Shukla that there was no need for issuance of any appointment order. Full stop. If Shri Shukla is to be believed, then he is trying to give clean chit to some persons who have been found to be guilty in the inquiry report submitted by Block Development Education Officer Samnapur. This aspect be also clarified by Shri Shukla in his affidavit. सर नेक्स्ट पेज पे 5 में यही सब लिखा है, वही मैं पढ़ रहा था सर। है? पैराग्राफ 5 में यही बताया, इंक्वायरी रिपोर्ट में सब कूट रचित है सर। मैं एक बार हाँ, वो क्या पढ़ कूट लूंगा रचित सर। है? सर मैं पैराग्राफ 5 पढ़ देता हूँ तो नेक्स्ट फिर पेज आपने पे। इनको कूट रचित है अगर ये, हाँ सर, हाँ, ये ठीक। क्या हुआ सर, मैं वही बताना नहीं, चाह रहा हूँ सर। कूट रचित है अगर ये, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, जी, जी। कूट रचित है, तो आपने क्या कार्रवाई की फिर इनके सर खिलाफ? वो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं एफिडेविट पे ले आऊंगा। अभी जो पता लगा है सर, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि जितने भी फर्जी अपॉइंटमेंट्स हुए थे, द डिपार्टमेंट हैज टेकन नोट ऑफ इट एंड एज पर द इंस्ट्रक्शन सर, वन ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर अगेंस्ट असिस्टेंट कमिश्नर, उन्हीं के खिलाफ सर एक लोकल इंक्वायरी स्टार्ट हमें हो नहीं गई। मालूम। वही सर आगे कब वही मालूम पड़ा आपको कि ये फर्जी अपॉइंटमेंट हुए थे? सर ये नहीं, ऐसा देख के मत बताइए, आप बताइए किस हाँ, तारीख को क्योंकि मालूम पड़ा मैं आपको? तो एफिडेविट पे बोल सकता सर हूँ ये मई 23 में पता पड़ा ठीक सर। है, लिखिएगा। Shri Shukla along with Shri Rohit Jain now submits that in May 23 it was discovered that certain persons were illegally given appointment which included petitioner, full stop. It is submitted that Lokayukt
inquiry has been instituted against Shri Hari Singh Parte, नहीं उनके खिलाफ नहीं can take असिस्टेंट कमिश्नर against the then assistant commissioner tribal welfare, जी सर but no such document is available on record to show that when FIR was lodged against by the special police establishment against the then assistant commissioner tribal welfare Dindori, सर and what action has been taken by the present incumbent against such persons who obtained appointment through illegal means. Full stop. It is also not brought on record that on what basis or on the basis of which inquiry report this submission is being made before the High Court that their appointments were illegal. Full stop. Thus, merely lodging of FIR against one of the incumbents to the post of Assistant Commissioner Tribal Welfare is not a sufficient circumstance when Shri Shukla himself admitted that there was no need for issuance of any appointment order in favor of the petitioner on the strength of he being appointed through parent-teacher association. Full stop. Thus, it is evident, next paragraph, thus it is evident that Shri Shukla too appears to be prima facie responsible for hiding correct facts from the court. After receiving his affidavit, appropriate action may be taken against Shri Shukla too. सर क्षमा चाहता हूँ पहली बार ऐसे में केस में क्या हो गया, कोई बात नहीं ना, आपने कोई गलती थोड़ी ना की, आपको जो मालूम था वो आपने बता दिया, आपने जो बताया वो मैंने लिख दिया, मैंने कोई एक भी शब्द इधर उधर लिखा हो तो बता दीजिएगा। अब उसका जो निष्कर्ष है वो तो निकालने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, वो चीज आपके हाथ में थोड़ी ना दे सकता हूँ मैं, ना आपको दे सकता हूँ, ना सरकारी वकील साहब को दे सकता हूँ।